हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये रहा दानिश। आज हम लोग किधर जा रहे हैं बोलना है क्या? सरप्राइज़ है। तो अभी जाते हैं, एक जगह जाना है, कुछ चीज़ ट्राई करना है, उसके बाद देखेंगे अगर वो पसंद आया तो वो बहुत जल्द यहाँ पे दिखेगी। हिंट तो दे दिया मैंने, बट फिर भी देखते हैं। तो चलो, मैं आज पिलियन बन के जा रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत बोर हो रहा है, आलस आ रहा है बाइक चलाने के लिए। तो दानिश लेके जा रहा है मुझे। तो चलो मिलते हैं डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे जिधर हमको जाना है। So I am riding the Honda 500X, CB500X. Actually, as per the new update, the price has gone down. So I'm just testing this bike because, as you all know, that मुझे bike change करनी है. I want to upgrade my bike from adventure. So bike is much smoother. I can say less or no vibration at all. It's a parallel twin. सिर्फ ये TFT नहीं है, that's the only disadvantage that I feel. Rest everything is okay. Power delivery is almost the same like the Adventure. This is 47 bhp and that Adventure is 43 bhp if I'm not wrong. But when we talk about the maintenance and every overall experience, this would be much better than the KTM one. So the front section that I feel is okay types, and it doesn't feel like I am riding a 500cc bike. Braking is good. So the bike does not come with the USD forks. So as per the new update, this is down by 1 lakh. So on road approximately 7 lakhs it would be. There's a waiting period of 3 months. And I did not feel any wind blast over here on my chest. Bike is really good. Chalo, let's go in and talk about the waiting period and what all things can be done. सभी मैं दानिश का बाइक चला रहा हूँ। बस वो बाइक तो बहुत अलग थी और ये बाइक का तो अलग ही बात है। So there's no much difference in power delivery. सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो थोड़ा रिफाइंड है, as it is a parallel twin and this is a single cylinder. जो फुट पेग्स एंड हाथ पे मेरे को वाइब्रेशन फील हो रहा है वो उसमें नहीं होता। दानिश में 2 इंच राइजर्स है।
मेरे वाले में डायरेक्ट हैंडल बार है 1.5 इंच के,